हाय फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो सोशल साइंस से क्लास 10 का सब्जेक्ट है। चलो हम सब पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो तीन सारे सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, जो एग्रीकल्चर ही होता है एक तरह से। सेकेंडरी सेक्टर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चर। और तीसरा है सर्विस। सर्विस सेक्टर मतलब जिस तरह से एक तरह से समझ लो कॉल सेंटर हो गया, कोडिंग प्रोग्रामिंग, ये सब तो एक तरह से सर्विस सेंटर हो गया। सर्विस एक तरह से सर्विस सेंटर ही है। चलो हम सब ये सब है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, देखो होता है जो प्रोड्यूस करता है नेचुरल, जो प्रोड्यूस नेचुरल रूट्स होता है, उससे वही एक तरह से प्राइमरी सोर्स होता है। फिर ये देखो, फिर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर उसी मैन्युफैक्चर रूट्स को फिर सर्विस अपलोड किया जाता है, उसी को आपको मैन्युफैक्चर किया जाता है, आपको सर्विस दिया जाता है। उसी सर्विस को ये इंटायरली प्रोसेस चलता है। These are the activities that are undertaken by directly using natural resources that for example the cultivation of protein, मतलब एक तरह से cultivation और protein को कर लेते हैं। वो एक तरह का खेती बाड़ी, it takes place where crop season. For the growth of the protein plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, protein, is a natural product. Similarly, in the case of activities like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of food, etc. हम सब इस चीज़ पर भी निर्भर है कि जैसे डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल, जैसे कि हो गया चारा हो गया और दूध हो गया, ये सब पर भी डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ product here, milk is a natural product. Similarly, minerals and ores are the natural products. जो minerals और ores होते हैं वो भी natural products होते हैं, जैसे दूध की तरह जो ड्राई से आती है। When we produce a good by exploiting natural resources, when we produce a good by exploiting natural resources, it can be activity of primary sector, जो हम लोग उसे खदान से मतलब जैसे खेती बाड़ी से या एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ये प्राइमरी इसलिए क्योंकि ये सभी चीज का बेस होता है। इसके बिना हम ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही सर्विस में हम ला सकते हैं। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, ये जो होता है, जो एग्रीकल्चर है, डायरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर के मुताबिक है। क्योंकि मेजरली एग्रीकल्चर से ही जुड़ा, एग्रीकल्चर ही इसका मेजर पार्ट है, इसलिए हम सब एग्रीकल्चर से ही से जानते हैं। बाकी बात मिनरल्स और चीज तो एग्रीकल्चर से आते नहीं, लेकिन तब भी ये उतने फॉर्म में नहीं जितना एग्रीकल्चर है। फिर आते हैं सेकेंडरी। Secondary sectors covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity. जो ये सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी, वो इस तरह का जो उस तरह का एक्टिविटी रहता है जो प्राइमरी प्रोडक्ट को उसको किसी तरह से बदल कर उसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए काम आ सके, इसलिए इसे सेकेंडरी एक्टिविटी। इट इज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ आफ्टर प्राइमरी, इसे अगला स्टेप कहते हैं प्राइमरी का। The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. ये patented या नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसे बनाया जाता है, जिस कुछ प्रोसेस इसे काम
करते हैं एसेंशियली। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम। इसे फैक्ट्री में या वर्कशॉप में या घर में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी spin yarn and wave cloth using sugarcane. Wait a second. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar और गुड़। हम sugar cane से देखो sugar cane से अगर sugar cane को एक raw material ले ले तो इससे sugar और गुड़ बना सकते हैं। We convert earth into bricks and use bricks to make houses. हम धरती से थोड़ा ये ईटा बनाते हैं, bricks बनाते हैं और उससे फिर घर बनाते हैं and buildings भी बनाते हैं। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that came up and it is called industrial sector। जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला था, बाकी बात अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं इसको। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज a third category of activities that falls under tertiary sector। ये देखो ये सर्विस सेक्टर है ना, ये टर्सरी सेक्टर इसको कहते हैं। मैंने गलत यहाँ हो गया, या फिर इसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर इसको कहते हैं, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, लेकिन नॉट इट एंड इट्स फॉर्म फ्रॉम डेवलप टू डिफरेंट फॉर्म। ये दोनों से अलग है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी से अलग है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर उसको हेल्प करता है डेवलपमेंट में। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एंड एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि सेकेंडरी और टर्सरी ये दोनों को प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये मदद करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर would need to be transported by trucks and trains and then sold in wholesale and retail। ये फिर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सामान है जो रॉ मटेरियल है या उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब यहाँ से ट्रक से या ट्रेन से यहाँ से किसी मेन मार्केट में पहुँचाया जाता है। जैसे कि यहाँ से मान लो एक कोलकाता से कुछ बना है, तो वहाँ पे कोलकाता भी एक बड़ा मार्केट है कि नहीं, मान लो यहाँ जो डिमांड दिल्ली में है, तो यहाँ से दिल्ली से बाय रोड जाएगा या ट्रेन से जाएगा, उसको फिर पहुँचाएगा, फिर वहाँ दिल्ली में डिमांड का फुलफिल हो जाएगा। At times it may be necessary to store these things in godowns। At sometimes जो sometimes it नेसेसरी होता है कि कहीं इसको स्टोर करना है। मान लो इसको कल या परसों ले जाना है, तो इसको स्टोर किया जाता है, फिर बाद में उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है। वी आल्सो may need to talk to others by other over telephone or send letters, communication or borrow money from banks to help production and trade। हम कहीं किसी से बात करते हैं टेलीफोन से या किसी भी माध्यम से या पैसे लेने के लिए बैंक से लेते हैं, टू प्रोडक्शन को मदद करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एंड सम एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज। जैसे हो गया ट्रांसपोर्ट, हो गया स्टोरेज, हो गया कम्युनिकेशन, हो गया बैंकिंग, हो गया और ट्रेड करना उस टर्सरी सेक्टर में आता है। Some these activities generate service that are the goods। The tertiary sector is also called service sector। हम बोले ना कि सर्विस सेक्टर भी है। तो कुछ एग्जांपल से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ सेट कर लेना ताकि पे डिमांड बढ़ेगा। चलो सर, कंपेयर देखिए हम इस तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो वेरी लार्ज नॉट गुड्स एंड सर्विसेज।
How do we count the various goods and services and know the total production in center? With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we add cars and computers and nails and furniture. It would not be uh, मेक सेंस। देखो हम सब क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम सब कैसे मैन्युफैक्चर क्या बोलते हैं यार, हाउ डू वी काउंट, कैसे हम सब काउंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज और कैसे पता चला कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है, यू माइट थिंक दिस इज इम्पॉसिबल टास्क। आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल, नॉट ओनली वुड द टास्क बी मतलब कठिन है, या मोट ऑन द मतलब ये आपको लगेगा कि कार्स, कंप्यूटर्स, नेल्स एंड फर्नीचर इट नॉट मेक सेंस। यू आर राइट। आप सही हो इस सोचने में कि आप ये प्रॉब्लम है। To get around this problem, economics suggests that values of goods, जो economics में PhD या MSc या रिसर्चर होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज rather than adding up the actual numbers। उसका वैल्यू बताते हैं rather than उसका एक्चुअल नंबर्स क्या है। जैसे 10,000 kg का वीट, 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट 20 रुपये पर kg, तो उसका वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। अब उसे 5,000 कोकोनट्स तो 15 रुपये में बेचा गया तो 75,000 रुपये हो गया। सिमिलर वैल्यू, उसी तरह वैल्यू गुड्स का वैल्यू देखा जाता है, ना कि वो कितना एक्चुअल अमाउंट में है। वो सिर्फ जो प्रोडक्शन करने वाला है उससे ही पता होगा, या आपको जाने की उतना ज़रूरत है नहीं। रिमेंबर दिस इज वन precaution has to that not every good and service that is produced and sold needs to be counted। ये जरूरी नहीं है कि जो भी goods produced हुआ है उसे count करना है। It makes sense only to include the final goods and services। Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill 20 rupees per kg। This mill grinds and the wheat and sells the flour to the biscuit company for 25 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packet of biscuits। It sells biscuits to the market consumer for 80 rupees per packet। 80 रुपये 20 रुपीज़ पर पैकेट बेचेगा। फिर इसे मतलब इसी तरह चलते रहता है। Why are only final goods and services counted? क्यों हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स such as wheat and wheat flour। In this example, intermediate goods are used up in producing goods and services। Final goods and services includes that goods value of all intermediate goods that are used in making the final good। Hence the value of similarly the value of all intermediate goods would be have been included to the count the value of flour and the wheat substance। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। फाइनल गुड्स जो सर्विस होता है, फाइनल वैल्यू जो होता है गुड्स और सर्विस हर सेक्टर में जो प्रोड्यूस होता है, वो टोटल प्रोडक्शन बताता है उस ईयर का। And the sum of production in the different sectors gives what is the GDP, domestic gross domestic product of the country। It is a valuable of all goods and services produced within a country during a year। ये बताता है कि आपके देश में कितना प्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर ईयर में, और आपकी इकोनॉमी को भी बताता है कि आप किस इकोनॉमी में है। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry। द mammoth task होता है measuring GDP का पता लगाना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के हाथ में है।
This ministry, with the help of the various government departments of all the Indian states, union territories, collects all information relating to the total volume of goods and services and their prices, then estimates the GDP. Recently, Indian government began to bring out the contribution in place of the contribution of three sectors towards GDP to be a par with the global practices. The GBA measures the contribution of three sectors of an economy after adjusting the taxes and subsidies. You will learn more about the GBA and the difference between GDP and GBA in higher classes. अब क्लास 12 में सीखेंगे कि अब ये GDP और GBA में क्या होता है. Here we will only understand how goods and services produced in these three sectors, primary, secondary and tertiary sectors. अब ये सीखेंगे, आप समझेंगे कि गुड्स और सर्विसेज से ही प्रोड्यूस होता है प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर में. The historical change in sectors. Generally, it has been noted from the stories of many now developed countries that are at initial stages of development. Primary sector was the most important sector of the economic activity. जो प्राइमरी सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. As the method of farming changed, the agriculture sector began to prosper. It produced much more food than before. Many people could now take up other activities. These are increasing number of craft persons and traders. ये जो it produced more food than before. पहले से ज़्यादा खाना बन रहा है. मैंने बहुत लोग बहुत सारे अदर एक्टिविटी जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चले गए हैं. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मनी टाइम्स. जो खरीद और बेचने वाला सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो गया है और बदल भी गया है. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, this stage most of the goods produced were natural resources, natural products from the primary sector, and most people are also employed in this sector. इस बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारे एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced. Factories expanding. Those people who have earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. These were forced to do so. As you read in history chapters, people began to use many more activity goods that were produced in factories at cheap rates. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उन लोगों को फोर्स किया जाता है जो कि आप फैक्ट्री में चीप रेट्स में प्रोड्यूस करें, गुड्स को प्रोड्यूस करें. Secondary sector gradually become the most important total production and employment. ये secondary sector gradually बहुत ज़्यादा production और employment के लिए important बन गया था. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sector has changed. In the past 100 years, so साल पहले तक there has been further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. 100 साल पहले ही सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में बहुत सारे विकसित देशों में ये शिफ्ट हो गया था. The service sector has become the most important in terms of total production. Total production के लिए सर्विस सेक्टर बहुत ही important है. Most of the working people are there are also employed in सर्विस सेक्टर. बहुत सारे वर्किंग पीपल हैं जो सर्विस सेंटर के लिए सर्विस सेक्टर के लिए एम्प्लॉयड हैं. दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज. ये जनरल पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है विकसित देशों में. व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द
three sectors in India. Over the years have been the changes similar to the pattern observed for the developed countries. Yeah, draft देखिए primary secondary और tertiary. ये शायद इंडिया का ही है. Draft 1 shows that the production of goods and services in these is दो years 2017 से 2 साल का जैसे 1777 टू 1778 फाइनेंशियल ईयर का है बता रहे हैं और 2017 से 18 तक ये दोनों साल का बता रहे हैं. For these 2 years between the data are comparable and authentic. You can see how the total production has grown up for 40 years. इसी की पहले का प्रोडक्शन 20 लाख करोड़ था पहले, अब हो गया है 1.2 करोड़ हो गया है, मतलब 8 ट्रिलियन से होगा ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है. Rising importance of the tertiary sector in production over the 40 years between 1977 to 1978 to 1977 to 1978 and 2017 to 2018. While production in all three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As the result, in the year 2017 or 18, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. जो tertiary sector है वो primary sector को replace कर दिया इन 40 सालों में. First, in any country several services such as hospitals, education institutions, post and telegraph services, public station, ports, village administration offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies are required. ये जो है ये जो सर्विसेज हैं ये कंसिडर किए जाते हैं बेसिक सर्विसेज. ये सब जो सर्विसेज हैं ये सब बेसिक चीज़ें में कंसिडर की जाती हैं. डेवलपमेंट कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज. सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज transport, trade, storage, and the like, as we have already seen. Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand of such services. अगर primary और secondary secondary sector का डेवलपमेंट होगा तो उसी हिसाब से आपका tertiary sector भी डेवलप करेगा. जैसे कि 1977 टू 1978 में प्राइमरी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता था. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर है टर्सरी. अब टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, फिर बीच में मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, फिर एटलीस्ट ये क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर आपके importance में है. Third, as income levels rises, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. जिस हिसाब से आपका इनकम बढ़ेगा आपका डिमांड भी टूरिज्म बढ़ेगा, शॉपिंग बढ़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग. जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट और स्कूल की डिमांड तो बढ़नी नहीं चाहिए. ये गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटी दे, ये जो डिमांड नहीं बढ़नी चाहिए. लेकिन बढ़ रही तो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की कमियों को निकाल रही है, बस और कुछ नहीं. Fourth, over the past decade also, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. पिछले डेकेड में मतलब पिछले कुछ शताब्दियों में
हमने देखा कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम important and essential part of ये communication information and communication technology become more important crucial role to our day-to-day life. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4 we shall see examples of new services and reasons for their expansion. हम सब चैप्टर 4 में ये इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. अभी चैप्टर 2 चल रहा है. However, you must remember that not all of the services sector is growing equally well. हम इसे हमें याद रखना होगा कि हर सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं. सर्विस सेक्टर इन इंडिया employs many different kinds of people at one. In there are immediate number of services that employ highly skilled and educated workers. हम हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड मजदूर को एम्प्लॉय कर रहे हैं. एट द अदर एंड there are very large number of workers engaged in service such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. और दूसरे एंड पर बहुत ज़्यादा नंबर पर सर्विसेज जैसे हैं कि स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन जो सुधारते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन जो यहाँ से वहाँ ले जाते हैं इस प्लेस से दूसरे प्लेस. These people barely manage to earn a living and yet they perform. These services become new alternative opportunities for work and available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about in this in this section. Next section. हम इसके बारे में दूसरे सेक्शन में देखते हैं. Remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of this three sectors in GBA, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows the share of employment. आज भी लोग भले ही सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आप देख रहे हैं 1977 टू 1978 इस सेक्टर में तो बहुत मात्रा में थे. मैन्युफैक्चरिंग बीच में ही था और मैन्युफैक्चरिंग इसमें सबसे कम में है. तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से प्राइमरी सबसे ज़्यादा था, सेकेंडरी थोड़ा सा नीचे था और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर सबसे कम था और टर्शरी सबसे कम बीच में था. आज भी लोग जबकि सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा में है, तब भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, जो कि बहुत गलत है. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं वो आज थोड़ा सा सुधार में है और टर्शरी सेक्टर जो इतना बड़ा इकोनॉमिक होल्ड करता है उसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना चाहिए. Why did not a similar shift out of primary sector has case of employment rate? It is become not enough jobs created in the secondary and tertiary sector. क्यों नहीं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाया है? As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, जो कि गलत है. तब भी आधा से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं. mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GVA. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce where they employ less about half of the people. Thus आधे से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करते हैं. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? But it in the three are more people in agriculture than it necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sector are employed. For instance, take the case of a small farmer Lakshmi. हम सब केस लेते हैं लक्ष्मी का. हाइपोथेसिस है ये एक हाइपोथेसिस स्टोरी है.
owning about the 2 hectares of unirrigated land dependent only on the rain and grown ये सिर्फ बारिश पर निर्भर है जिससे जो हर प्रोड्यूस करती है all 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? They are now else to go for work. You will see that everyone is working. None remains idle but is in actual fact their level effort gets divided. Each one of is doing some work but no one is fully employed. इसे disguised employment कहते हैं. This is the situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than. This kind of unemployment is heading to counter someone who does not have a job and clearly visible as unemployed. Hence is a disguised employment. हम बोले थे कि disguised employment इसको कहते हैं जिसके पास काम ना हो लेकिन तब भी दिख रहा हो कि वो काम कर रहा है लेकिन वो एक्चुअल में कोई काम कर ही नहीं रहा है तो उसे disguised unemployment कहते हैं. आपको समझ आई? Now supposing a landlord Sotharam comes and hires one or two members of the family to work on his land, Lakshmi's family is now able to earn some extra income toward wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not need affect production on their farm. In the above example, people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much as from there. वो उतना ही प्रोड्यूस करने जितना वो प्रोड्यूस कर रहे थे उस लैंड से. There are lots of farmers like Lakshmi in India. This means that even if you remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. This incomes of the people who took up the increased total income. This underemployment can happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed in painters, plumbers, repair persons, and others doing odd jobs. Many of them don't find work every day. बहुत सारे लोग हर दिन नॉट जॉब नहीं ढूंढ पाते. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have a better opportunity. खुद से करना. Let's what do. How to create more employment. हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? पिछले डिस्कशन में हमें पता चला कि and in agriculture there are also people who are not employed at all. In what ways we can one increase employment for people? Let us look at some of them. Take the case of Lakshmi with her 2 hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a certain crop. Wheat during the Rabi season. Let us suppose that one of hectare of wheat can provide employment of 2 people for days, including sowing various of fertilizers. So 2 members of the family can be employed in her own land. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation between the agricultural sector, reducing the problem of underemployment. Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of these
For this, they will maybe required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops, or makes better than rural routes, so the many floods has been elsewhere. Several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productivity employment to not just farmers but others such as those in services like transport or trade. Lakshmi need to be transformed to water alone to cultivate. The sea needs seeds, fertilizers, agriculture, employment, and from sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from moneylenders and pay a higher rate of interest. If a local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will able to buy all these things in time and cultivate her land. This means that along with water, we can need to provide cheap agricultural credit to the farmers to improve. We'll look at the chapter. Another way by which we can tackle this problem tackle this problem uh, to re-identity, promote in local industries and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow Ahar and chickpea pulse crops so that setting up a dal meat to produce and process this and sell in the city. Such example, opening a cold storage could have opportunity to for farmers to store cold storage खोलने का फायदा होगा कि फार्मर्स पोटैटो इन जैसी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं फिर बाद में बेच सकते हैं. We can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that possible fighters, instance potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, सब जो open market में बेच सकते हैं. Many of them may be working as child laborers. If these child children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers, and other staff. A study conducted by the Erstwhile Planning Mission, now known as Niti Aayog, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in education sector alone. Similarly, we are to improve the health situation. We need more doctors, nurses, health workers, essentially to work in rural areas. These are ways by which would be created, and we would also able to address the improvement aspects of the development taught in the chapter 1.
Each state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It would be tourism and real craft industries and new services like it. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, same study by the Planning Commission says the tourism sector has improved every year with 35 lakh people. We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short time, we need quick measures. Imagine this: the Union government in India made a law im- implementing the right word districts of India. इसलिए तो मनरेगा बनाया गया है पास में कि आपको काम करने का रहता है और काम मिल सके 100 दिन का। अब शायद वो नाम बदल दिया है, नाम कुछ ऐसे कुछ हो गया है। आप देख लीजिए कि क्या नाम बदला गया है। Division of sectors as organized and unorganized. ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज किया गया है। इसी कारण था काम करती है, ऑफिस जाती है 9 से 5:30, द रेट से सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द मंथ। ये सब मतलब ये है ऑर्गेनाइज्ड और ये है अनऑर्गेनाइज्ड। Tanta works in the organized sector. Organized sector covers those enterprises or places where a regular term they are registered by the government and have to follow its rules and regulations, which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act. It is called organized because it is some formal process and procedure. Some of these procedure people may not be employed as anyone but also there but have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. Workers in the organized sector enjoy security of employment. They are accepted to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to pay overtime by the employer. They also get survival after benefits from the employers. What are they get paid leave payment during holidays, पीएफ है, ग्रेजुएटी एसेस ये सब मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। इन कॉन्ट्रास्ट समर वर्क्स इन दी अंडर सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैटेगराइज ये सब किया गया है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज लीव टू सिकनेस, एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर। और जो टमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है जिसका कोई कुछ नहीं है, ना पीएफ है ना ग्रेजुएटी है, तो प्रोविजन ही नहीं है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं, जब चाहे एम्प्लॉयर तब निकाल सकता है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उसको बचाने के लिए शायद organized sector offers jobs that are the most sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. जो organized sector है वो expand कर रहा है बहुत धीरे धीरे। It is also common to find organized sector enterprises in the unorganized sector that adopt such strategies to avoid taxes and refuse to follow laws and that protect laborers। वो इसलिए कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी वो भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उसे टैक्सेस बचाना है, प्रोटेक्ट एंड लॉस को फॉलो नहीं करना है। रिजल्ट नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स व्हिच पे a very low salary. They are often exploited and not paid a fair charge, मतलब जितना भी बेच है उसको फेयर तरीके से नहीं दिया जाता है। Then since the 1990s, it is common to see a very large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the organized sector with a low earnings. Besides the need for more work, there is also need for protection and support of the workers in the unorganized sector. जब ऑर्गेनाइज से ही फर्क नहीं है तो अनऑर्गेनाइज से क्या होगा। Who are these vulnerable people who
need protection in the rural areas. The organized sector mostly comprises of landless agricultural laborers. Some are marginal farmers, sharecroppers, artisans, weavers, blacksmiths. ये सब जो nearly 80% of rural handicaps in India are in small and marginal farmer category. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture and food, steady storage facilities, and marketing outlets. In the urban area, organized sector comprises mainly of workers in small-scale industries, casual workers in construction, trade, and transport, etc. And those work as street vendors, hard load workers, German makers, and red Peters, small steel industries also needs government support for production, raw material, and marketing of output. The casual workers in both rural and urban need to be protected. जो अर्बन और रूरल में दोनों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इन्वायरमेंट बस बस कहीं छुप के बैठी है, घूस खा रही है, करप्शन, इतना करप्शन थी। क्या बोले। We also find the majority of the workers from scheduled castes, tribes, and backward communities find themselves in the unorganized sector. Besides getting the irregular and low-paid work, these workers also face social discrimination, protection, support to the unorganized sector workers is thus necessary for economic and social development. ये कर लेना आप। Sectors in terms of ownership, public and private sector. Another way of classifying economic activities into sectors on basis of owns assets and is responsible for delivery services. In public sector, the economic government owns the most of the assets and provides all the services. In private sector, ownership of assets and delivery of services in the private individuals or companies, railways or post office is example of public sector. Like various companies like Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO, Tata Iron and Steel Company or Reliance Industries Limited are privately owned. To get such services have to pay money to the individual companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government saves money through taxes and to make expenses of the services rendered. In modern day government spend it on the whole ranges of activities. These are the what are these activities? Who are government spend on such activities? Let's find out. There are several things needed by the society as a whole by which the private sector will not provide at a reasonable cost. So there are some activities which the government has to support. The private sector may not continue the production of business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation much may push the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government have to steps in buying rates which these industries can afford. Government has to be a part of the cost. Similarly, the government of India buys bid and rice for farmers at fair price. This it stores in its godowns and sells at lower prices to consumers. So, ration revenue essence of the you should read about this in this chapter on the food security in क्लास 9 में ही आपको पढ़ना था पिछले साल। आप इकोनॉमिक्स का किताब लेके आप पढ़ सकते हैं फूड सिक्योरिटी in class 9. There are number of activities in the primary responsibility of the government. The government must spend on this providing health and education facilities. all all its own one example we have discussed. Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is duty of government. India's size of illiteracy per
population is one of the largest in the world. It's the largest है. Similarly, we know half of the Indian children are malnourished and quarter of them are critically ill. We have read about the infant mortality rates of Odisha is 36 or Madhya Pradesh 43, higher than some of the poorest regions of the world. Government also needs to pay attention in respects of human development such as ability of safe drinking water, housing facilities for poor and and nutrition. It also the duty of government to take care of the poorest and most ignored region of the poor increased in such areas. Thank you दोस्तों खत्म हो गया आज. Thank you.